हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विसु रैंडम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एमआई रेडमी एक्जियोमी का फ़ोन है, अगर उसकी हड्डी बॉडी या मिडल फ्रेम या हाउजिंग अगर क्रैक या डैमेज या ब्रोकन हो गई है तो आप उसे किस तरह चेंज कर सकते हो बाई करके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप हाउजिंग या बॉडी चेंज कर सकते हो, मिडल चेंज कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है मोबाइल के अंदर ये मिडल फ्रेम ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के ऊपर अपना मदरबोर्ड पीसीबी फिक्स होती है, इसी के ऊपर अपनी टच स्क्रीन कॉम्बो फोल्डर फिक्स होता है और अपना बैक पैनल भी इसी के ऊपर फिक्स होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी मॉडल के बारे में बताया है कि किस तरह किस मॉडल की कैसी फ्रेम आती है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही मोबाइल रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको एमआई रेडमी एक्जियोमी एमआई की किसी भी मॉडल की फ्रेम अगर आपकी क्रैक हो गई है, डैमेज हो गई है, ब्रोकन हो गई है, आपको बाई करनी है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और फ्रेंड्स, साथ ही लिंक मैंने इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दे दिया है, वहाँ से आप मुझे किसी भी कोई भी प्रकार का आपका सुझाव हो, आपको कुछ पूछना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को एंड तक देखिएगा।
फ्रेंड्स आपने देखा मैंने किस तरह सभी मॉडल की मिडल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई है, किस तरह की मिडल कैसी आती है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप यू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही प्रेस बेल आइकन, जिससे मेरा जो भी न्यू वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।